So I will discuss few questions from thermodynamics and statistical, just to revise. So the first question is like this. At each time step, a random walker in one dimension either remains at the same point with probability 1/4 or moves by a distance delta to the right or left with probabilities 3/8 each. After n time steps, its root mean square displacement is. Okay. So I can put this question for you. You can read it. Got it, everybody? Read it. Yes, sir. At each time step, a random walker in one dimension either remains. So normally you have uh, two things. Either it is going right or it is going left. But this time we have three options. What is the third option? That it remains at the same point. So at the same point, probability is 1/4. It goes right, probability is 3/8. It goes left, probability is 3/8. This type of situation is there. Okay. और जो step का size है, that is, this size is this triangle. After n steps, so after n steps, its root mean squared displacement x RMS is equal to question mark. This is the question. Okay. So normally हम लोग जो पढ़ते हैं, we take this random walk problem. Only we have two things, either it is going right or it is going left. But in this question they have added one more dimension, that it can remain at the original position also. So I will start it from this, that if you check the options, what are the options? Some questions from options, it becomes easy to grasp. It is delta under root n, b delta under root 9/16n, c delta under root 3n/4, and d delta under root 3n/8. Okay, so this is the x RMS. So that means I can write x RMS as, in every quantity you see, there is under root n. Can you see that in all of the options? Yes. So I can put it equal to k under root n, because in every option under root n is there. So that means x RMS is like this. So agar मैं suppose I take the step like this,
स्टेप साइज अगर सपोज 1 ले लेता हूं तो इट विल बी लाइक दिस, दैट आइदर इट रिमेन्स 0 or it goes to 1, just to make it under simple, or it is at -1. 0 probability is half 1/4. This is probability 3/8. This is probability 3/8. यही तो है situation. Yes. Tell me. When steps is delta, I will multiply it by delta. So I can calculate the average of x square from here. Tell me what it will be according to the probability. Summation I pi xi square. So it will become, बताओ भाई, first one is 1/4 into 0 square plus second 3/8 -1 square. no uh, 1 into delta is also there. चलो वो बाद में कर लेंगे. Okay, because step size is delta na, that's okay, just take it as 1 and then we will multiply it by delta. So 3/8 1 square plus 3/8 minus 1 square. So what it will become? This will become 0. 3/4. 3/4. So x RMS, take the under root. x RMS is equal to k क्या हो गया? Delta times under root 3/4 into n. समझ आ गया सबको? So this is the answer. Is that okay? Yes, sir. Okay. Next is you just try this, everybody. Read the question with reading question is very, very important. Yes. Read it and explain it to me. A particle hops randomly from a side to a nearest neighbor in which each step on a square lattice of a unit lattice constant. The probability of hopping it to the positive x direction is 0.3 and to the negative x direction is 0.2. To the positive y direction is 0.2 and to the negative y direction is 0.3. Add करो देखो 1 आ रहा है. If the particle starts from origin, the mean position after n steps. So you can do it. बिल्कुल similar question है like we have done right now. यहाँ पे कितने ऑप्शन आ गए?
Yes. How many options we have? 4 options. 4. So n steps के बाद तो n multiply हो जाएगा. What will be average Ri? Tell me. Summation XI I square average. Pi Ri. This is the average ना? बोलिए भाई. Yes, sir. Point. सर So इसको ब्रेक करके XI एवरेज प्लस YI एवरेज लिख सकते हैं या? हाँ लिख सकते हैं. अरे they are orthogonal vectors ना. That is the beauty of I cap and J cap. Yes, yes. Okay. So this will become uh, Pi is what? 0.3. बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी. 0.3 I cap I cap plus plus 0.2 minus I minus cap I cap plus 0.2 J cap plus 0.2 J cap plus 0.3 minus J cap. 0.3 minus J cap. So what we will get? .1 I cap minus 0.1 J cap. 0.1 1/10 लिख दूं. Yes, sir. I cap minus J. I cap minus J cap. And after n steps, In multi. n/10 I cap minus J cap. Is that okay? So these questions, just in reading, they may look difficult to you, but actually they are not difficult. Okay. Chalo, let us try another one. Just see it quickly, read this. किसी को कोई doubt हो तो पूछते रहना. सर इसका RMS जब निकालेंगे तो इस तो स्क्वायर 0 हो. निकालो निकालो जरा. RMS निकालो. Average so RMS में XI अलग निकाल लो, YI अलग निकाल लो. Okay. Okay, sir. तो सर आंसर सेम होगा क्या? आ सकता है, चेक करो. सर पोजीशन तो 1 1 होगा तो उसका PI स्क्वायर 1 होगा. हाँ राइट. ठीक है. नेक्स्ट करें. Yes, sir. सॉर्टर नेक्स्ट क्वेश्चन समझाओ. सर ये तो पहला वाला क्वेश्चन का सेम है. जल्दी से करो फिर. ये तो बहुत ही सिंपल है. सो रैंडम वॉकर. व्हाट इज द फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी? 2/3. 2/3. And backward probability 1/3. This is 0. This is 1. This is -1. And the mean displacement of the walker after n steps. So average displacement is 2/3 into 1 plus 1/3 into -1. Yes or no? Yes, sir. 1/3 I So cap.
It will be 1 by 3. Average into displacement is 1 by 3. So after n steps, n by 3. n by 3. Okay. Very nice. Next question. Jaldi. Variance. हाँ जी हाँ जी. Who will explain? कोई और explain करो जल्दी से. Anjana, can you explain? No? Anjana, are you there? Yes, sir. Question बस बता दो क्या है question. I am not asking about solution. Just what is question? Tell me. इस तरीके का एक बॉक्स है. It is divided by a wall. This is V by 3. This is V. ये बचा वाला कितना हो जाएगा? 2v by 3. By 3. 2V by 3. So if the volume of the smaller compartment is V by 3, the variance. So you remember what is sigma square variance? सर पर नॉलेज का अलग होगा. Sigma square is what? N p into into P p 1 into minus 1 p. minus P. This is the variance formula for variance. Direct इस पे कई बार question पूछा है. And binomial का NPQ, right? So this is variance. It is NPQ भी लिख सकते हो इसको. Okay. Calculate for n particles. This suppose n particles. So sigma square is equal to n. Suppose the probability of particle being here is 1 by 3. 2n by 9 1 by 3. into 2 by 3. So what is probability being here? It is 2 by 3. So sigma square is 2n by 9. 2n by 2 by 9n. 2 by Right? 9. 2 by 9n. And what is the standard deviation? Root Root over. 2n by 3. Root 2 by 9 into root n. Okay. So many times you will see this under root of n for standard deviation. बहुत सारे expressions में you will find it. Okay. Okay, let us quickly. Yes. Now who will explain? Which questions? See, I have. You can see
Which one? अभी जो भेजा है दोनों में से कौन सा? मेरे ख्याल से तो सीक्वेंस में पहला ही होना चाहिए। हाँ नहीं। Okay. हम्म तो consider a random walk on an infinite two-dimensional triangular lattice, a part of which is shown in the figure below. If the probability of moving of any of the nearest neighbor sites are equal, तो इस तरीके से एक ट्रायंगल है, ऐसे ही अगल बगल सारे ट्रायंगल हैं। The probability, if the probability of moving to any of the nearest neighbor sites are equal, what is the probability that the walker returns to the starting position? So I mean from here, here and here, it can make many triangles, like it can go like this also, na? You see the web? ऐसा बना हुआ है ना? Yes? बोलो भाई, it is like this or not? Yes. So. It is like this. It is like this and this and this, like this. But you have to understand that आपने यहां से शुरू किया और आपको यहीं वापस आना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे। Sir, done. So here, okay, let me discuss with others. यहाँ पे you can take any direction to make a triangle. If you go in any of the possible directions, you will get a triangle, right? No problem. So in any direction you go, you can make a triangle. ये बात समझ आ रही है सबको? So what are the possible directions from a point? 6 directions हैं, तो ये सब में जाने की तो equal इसमें probability कहीं है। भी आप जाओ, you will make a triangle. No problem. Now you have suppose taken this path and you reached here. 2 directions हैं only, अगर वापस आना है तो। So either you can come like this or you can go like this. So it is 2/6. अब 1 डायरेक्शन है वापस आने के लिए। And अब यहाँ पहुंचने के बाद there is only one way. So it is 1/6. So it is 1/18. कितना आ रहा है? Yes. Okay. सबको क्लियर है भाई? सर वो 2/6 या 3/6 होगा? कैसे बताओ? मान लो तुम यहां से यहां चले गए, अब ये ओरिजिनल पॉइंट पे आने के कितने तरीके हैं? 6 तरीके। इक्वल देखो, अब consider a random walk on an infinite two-dimensional triangular lattice, a part of which is shown. If the probability of moving to any nearest neighbor sites are equal, what is the probability that the walker returns to the starting position at the end of exactly 3 steps? Hello? Yes sir. Exactly 3 steps. और ओके। ये नहीं कि तुम ऐसे 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 घूम के समझ रहे हो? यस सर। यहाँ पे आप जब पहुंच गए तो आप
ऐसे करके भी ट्रायंगल कंप्लीट कर सकते हो और आप ऐसे करके भी ट्रायंगल कंप्लीट कर सकते हो, इसलिए वहां पे दो रास्ते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. सॉर्टन, Yes, sir. when you are here and you want to reach this point exactly in 3 steps, so either you go by this way or you go by this way. But once you are here or here, you have only one way to return. So that's why out of 6 ways, you have only one way. Is this clear? And can I erase? Yes, sir. Again, tell this root mean square deviation. अभी क्या सर, रूट एनपी क्या हो? Sigma square is equal to रूट एनपी क्या हो? फॉर्मूला बर्नौलीज and what is the step size here? ए in one direction. Lattice spacing is A. तो जितना लेटिस साइज होगा उतना ही आई थिंक स्टेप साइज होगा. ये तो पुराने क्वेश्चन जैसा ही है ना? अभी किया था ना, 1 स्टेप साइज लिया था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया था, डेल्टा लिया था तो डेल्टा से कर दिया था, राइट? पुराने क्वेश्चन भी तो है ऐसे ही। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था हमने, मूव्स बाय ए डिस्टेंस ऑफ डेल्टा। ओके, तो लैटिस मतलब जहां पे नेक्स्ट है ना, उसी को तो कहते हैं सॉलिड में द नेक्स्ट साइड। ओके, नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस, जो कि अलग अलग टाइम पे आप लोग पूछते रहते हो, तो लेट मी डू इट। सर लास्ट वन का टोटल स्टेप साइज कितने से मल्टीप्लाई होगा? ए से? हाँ, ए से। जैसे सपोज यहाँ पे है, 0 पे है, जी तो लैटिस पॉइंट किसको कहते हैं? जहां पे अगला साइट होगा उसी को तो कहते हैं। जी. हाँ ठीक है फिर, तो दैट इज लाइक डेल्टा ना, पहले वाला डेल्टा जो है। बट वो टू द राइट डेल्टा है, टू द लेफ्ट के लिए भी सर डेल्टा ही राइट, होगा. वो सर राइट बाय अ डेल्टा राइट एंड और लेफ्ट लेफ्ट है. फॉर बाय अ डेल्टा, राइट और लेफ्ट। तो दोनों का कंबाइंड पूछ रहा है। हाँ वही तो लग रहा है। जस्ट अ सेकंड, तो फिर 2a से मल्टीप्लाई करेंगे। सर प्रोबेबिलिटी तो दोनों जगह जाने की है ना, लेफ्ट और राइट. हाँ, तो तो 2a से मल्टीप्लाई करेंगे फिर। ओके, 2a रूट एनपी क्यू. या हम्म
ओके, ये क्वेश्चन देखो जरा. Sir, can you explain why is it 2A? Just a second. Yes. So in this question, a particle hops from one-dimensional lattice with a lattice spacing A. The probability of the particle to hop to the neighboring side of right is P, while the corresponding hop to the left is Q. The root mean square deviation. So वैसे तो delta square is I mean जो standard deviation है that is NPQ, right? NPQ. But what is the size? So depending on the size, तो यहाँ पे size क्या लेंगे? Suppose it is here and next time it is here. These are the sides, ना? So lattice spacing इसको बोलेंगे. This is A. ये आप लोग बताओ भाई, solid के हिसाब से. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो if this is the size, see, एक बार ये check कर लेना आप लोग कि it is traveling a distance A as a step or it is traveling a distance 2A as a step in lattice. अगर one dimensional lattice है तो one dimensional lattice में step size क्या होता है, बस ये बता दो मुझे. Probability के साइड से कुछ नहीं करना है. Probability के साइड से everything is okay. P is right, Q is left. So NPQ. Just we have to multiply it by step size. Okay? ये आप लोग देख के बताना. चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा. एक हैमिल्टोनियन गिवन है which is very interesting Hamiltonian. It is equal to P1 square by 2m plus P2 square by 2m plus k times Q1 square plus Q2 square plus 1 by 4 Q1 Q2. I mean you can imagine मन में सिंप्लिसिटी के लिए Q1 को आप x सोच सकते हो और Q2 को y सोच सकते हो. Okay? So it is just a two-dimensional Hamiltonian. बस problem is this cross term. अगर this was not there, it is very easy question. Half kbt, half kbt, half kbt, half kbt. Correct? So सर इसको होल स्क्वायर क्रिएट करेंगे ना, आई थिंक. whole square नहीं create होता ना. So the partition function z is equal to, पहले understand the problem. ये बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है. Minus infinity to plus infinity dq1 minus infinity to plus infinity dp1 minus infinity to plus infinity dq2 minus infinity to plus infinity dp2 e to the power minus beta h. यही तो होता है partition function ना. This is the partition function.
एंड यहाँ पे क्या होता है पार्टीशन फंक्शन में 1/h³, बट दैट इज नॉट गिवन, दे हैव डिफाइंड इट लाइक दिस। ये दिस इज गिवन, अप टू दिस इट इज गिवन। इसमें कोई चीज ना समझ आ रही हो पहले ये पूछ लो, उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। इफ अगर सिंप्लिसिटी के लिए आप चाहो तो इसको px py, इसको x² y², इसको 1/4 xy ऐसे भी सोच सकते हो। प्रॉब्लम इज दिस विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम। ये तो सिंपल है ना, e⁻ बीटा h में these two terms they will just come out and get integrated, yes or no? तो कितना होते हैं वो? √2πm kbt, √2πm kbt. That is not a problem. Problem is double integral -∞ to +∞ e⁻ beta k q1 square plus q2 square plus 1/4 q1 q2 d q1 and d q2. This is the problem. How to handle this? So there is something that is called Jacobian transformation. Jacobian transformation. I mean, you are aware of this Jacobian transformation. Like, आपके पास suppose double integral dx dy होता है, तो इसको आप अगर दूसरे कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, सपोज r और थीटा, like this, तो you get here one r also ना? बोलो भाई। Yes, sir. This is Jacobian. This multiplier is Jacobian because x comma y is transformed into r comma theta. So dx dy is replaced by dr d theta. But there is a multiplier coming which is called Jacobian. ऐसी 3D में suppose triple integral dx dy dz है, it is converted into triple integral dr d theta d phi. But there is a multiplier r square sin theta that is called Jacobian multiplier. बात समझ रहे हैं? बोलिए भाई, are you understanding? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. So this will be handled. I will transform it into another space for integration, because in this space we can't integrate, you can see, because of the coupling term. They are very dangerous. Coupling term, we have to transform it in another space जिसमें coupling खत्म हो जाए. So let us try to apply the transformation. I will transform q1 comma q2 into a space u comma v, and here q1 I will put u plus v and q2 I will put u minus v.
So check what this will become. Q1 square plus Q2 square plus 1 by 4 Q1 Q2. Check. It will become U plus V square plus U minus V square plus 1 by 4 U plus V U minus V. ओके ये बताओ कितना हो जाएगा? नाइन बाई फोर यू स्क्वायर प्लस 7 by 4 v square. Check करो. And the Jacobian value of Yes, sir. Jacobian ju comma v, which is minus 1. ju comma v is equal to, so derivative करो, q1 comma u, then q1 comma v V1. and q2 comma u and q2 comma v. So what we get here is minus Minus half. So this minus 2, sir. minus half. Oh, sorry, minus 2. Minus 2. Minus 2. This is minus 2, no? Or 2? Minus 2. Okay. So here, this integral will be written like this. Minus integral to plus integral, minus integral to plus integral, whatever here, dq1, dq2 is transformed into another integral, minus infinity to plus infinity, minus infinity to plus infinity, into mod of Jacobian. So that's why mod of Jacobian and e to the power minus beta k. बताओ भाई, what we will get? 9 by 4 U square plus square 7 plus Plus 7 by 4 4 v square du d. dv. So this is the beauty of Jacobian transformation, that cross term is gone now. You know this integral, how to write it. Under root pi by alpha. लिख लो. 2 times पहले वाले का क्या हो जाएगा? Under root pi by alpha. Under root pi by alpha. What is alpha here? Beta k 9 by 4. Beta k 9 by 4 into under root pi by alpha. Beta k 7 by 4. Now this part of integral is solved, and we will get z is equal to pi by beta k. So what is K? Sorry? Sorry, repeat the question. Nothing, sir. Pi by beta k, सबको multiply करो. Under root 64 by 63. This you will get.
सर एक जनरल क्वेश्चन है, हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन में आपने u प्लस वी एंड u माइनस वी लिया, इज इट फिक्स्ड और इट इज फिक्स्ड फॉर सच सिंपल प्रॉब्लम्स। जैकोबियन के हिसाब से प्रॉब्लम सिंपल है, अदरवाइज देर इज ऑल्सो डेरिवेशन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली वी राइट इट लाइक दिस, Q1 is equal to AU plus BV, Q2 is equal to AU minus BV, and then we put it and solve it, ठीक है ना? बट आपको जब भी इस टाइप का दिया जाएगा सम कांस्टेंट इनटू कपल टर्म, सो दिस विल वर्क। ओके, थैंक यू। जितने भी कार्टेशियन से स्फेरिकल, पोलर, सिलिंड्रिकल, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हैं। दीज ऑल आर जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीवेयर दिस विल वर्क। ओके सर। So there is a question in JEST also where x square plus y square plus xy was given. You can try this also for Jacobian transformation. Potential term. इसमें पुट करो जरा, x is equal to u plus v and y is equal to u minus v. देखो जरा एक कपल टर्म गायब होता है कि नहीं? क्विकली। Is 3u square plus v square. वेरी गुड। कितना आ गया? 3u square plus, 3u स्क्वायर प्लस Plus v v square. स्क्वायर। तो ये देखो जेस्ट का भी ये सवाल सॉल्व हो गया। तो गुड वन ना? One question I want to discuss, which is in terms of symmetry, it is very, very interesting. Everybody check this. I want complete explanation, not the solution. अपने आप से बताओ, who will explain? Just the explanation of the question I am wanting, not the solution. क्वेश्चन डिस्कस करने लगो, देखो स्टूडेंट्स सारे गायब हो जाते हैं। मतलब रियल प्रॉब्लम्स फेस करना। In in number of spin One up thing I particles. want to say, क्या हुआ है? I have discussed spin half system. जनरलाइज्ड डिस्कस किया है। जनरलाइज ये वही है जो जनरलाइज डिस्कस किया है। It is the ये same. I have discussed the spin half system in which it was a two level system, अगर आपको याद हो, minus mu h और प्लस म्यू एच। plus mu h. I recommend everybody to read it from Patharia. Just go through it. बहुत quickly हो जाएगा क्योंकि मैंने कराया हुआ है क्लास में. You will understand everything. Okay? यस सर। So
classical, and even you can see little bit of quantum mechanical also. What happens when quantum mechanics is applied? Okay. So in that two-level system, if you remember, I was able to write Z, U, S, F, and whatnot. Everything we can write. Yes or no? Yes, sir. And if you remember, U is equal to F plus TS. So what was S is equal to? U minus F by T. Yes or no? Once you write Z, you are able to write U, you are able to write F. क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes. You are able to write both. So within no time, आप फटाफट लिख सकते हो what is the value of Z, what is the value of F, what is the value of U. So I recommend you all to write all that and then arrive at this expression. Actually मैंने entropy लिखवाया हुआ है. Entropy you will find it like this, S by N kb. Entropy per unit this लिख लूं अगर, it will be minus NE plus U upon 2NE and plus ln NE plus U upon 2E and minus NE minus N minus U upon 2NE and ln NE. ये निकालो जरा जल्दी से, minus U upon 2NE. upon 2E. What is Z in this case? Z1? Anybody? 2 cos 2 hyperbolic beta mu h. beta mu h. What is U? Minus mu h tan hyperbolic beta mu h. Minus 1 by Z1. So minus 1 by minus mu h. Tan hyperbolic beta mu h. Tan hyperbolic beta mu h. What is F? Minus kVt ln cos hyperbolic beta mu h. ln cos hyperbolic. Sorry, 2 cos hyperbolic beta mu h. 2 cos hyperbolic beta mu h. Okay. From here, try to write this equation or just write S. S लिखो जरा. What will be S? Sordon. What will be S? S is, अभी क्या लिखा था मैंने? F minus u by u minus f by t. Sorry. U minus Plus F upon T upon T. So what is U? minus mu H Minus mu H tan hyperbolic
tan Beta. hyperbolic beta बीटा mu को s. 1 KBT replace That is not required because you have to see the symmetry. See the question, symmetry is to be seen into energy level, E. Okay. okay So हाँ जी. The variation is seen as S and E, the entropy and internal energy. तो फिर तो U की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट नहीं करनी चाहिए यहाँ पे E ये वाली एनर्जी है, लेवल की एनर्जी, या फिर the behavior of entropy of the system as a function of energy, as a function of this mu h actually. Okay. Okay. So S is equal to minus this, put mu h is equal to E to see the variation. I mean, you can put it X also. X and minus F. कितना हो जाएगा? Plus KB ln 2 cos hyperbolic beta x. So actually we have to see the graph between S and X. What type of graph you expect? Forget about this, even we don't need to go up to this level. बताओ भाई. SX किस टाइप का ग्राफ है? S of minus X क्या सर होगा? F में माइनस KBT log Z फॉर्मूला नहीं होता फ्री एनर्जी का फॉर्मूला माइनस KBT log Z होता है तो यहाँ KBT नहीं आएगा log 2 से नहीं पहले KB यहाँ पे हाँ KBT होता है. It is energy ना, तो ऊपर dimensional. यस Yes. It is energy, so it will be dimensionally energy. Yes, correct. That was mistake. सर F is बाई टी डिवाइडेड बाय टी था ना हाँ डिवाइडेड बाई टी भी है. अरे मतलब मैं जस्ट अब फंक्शन देखने लगा, अब टी की वैल्यू खत्म हो गई ना. बताओ भाई, एस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? एस ऑफ एक्स यस odd into odd, even. This is even. बोलो भाई. ओके सर यस सर इवन फंक्शन So which of the graph is even? Check which of the graph is symmetric about y-axis. ऑप्शन ए ऑप्शन है. फिनिश. समझ गए? Is that okay? यस सर यस सर Many times a graph between S and E is given, and they ask you something about temperature. So how to make a graph between S and E? In particular, I am talking about this question. Everybody see this?
चेक करो। सर ये स्लोप से होगा। So it is like this. You have to tell the temperatures, right? Slope is between S and E. So how to approach this? So basic formula of entropy. So What is TC that? is greater than TB greater than ds is TA. equal TDS is equal to DU plus PD. DE plus PdV. So entropy of a thermodynamic system as a function of energy is given by the following graph. The temperature of the phases A, B, and C denoted by TA, TB, and TC. So same. If I want to calculate del S by del E, that will be the slope. So ds by de, जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर कम। it is equal to 1 plus 0. सर आपने 1/t कर दिया। Oh sorry, क्या कर रहा हूँ? TdS by de is equal to 1. So del S by del E, the slope is equal to 1 by t. So इसका स्लोप, इसका एंगल कुछ ज्यादा दिख रहा है 60 डिग्री मान लो, इसका कम दिख रहा है 30 डिग्री मान लो, तो इसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप ऑफ यस सर। स्लोप ज्यादा है मतलब तो T टेम्परेचर कम कम है। है, तो TA is TC हाईएस्ट होगा less than TC एंड TB 0 है। और Sorry. TB तो बिल्कुल ही ये स्लोप 0 है, तो TB टेम्परेचर क्या है? infinite है, वेरी infinite. लार्ज ना, TB TC TA। तो TB सबसे ज्यादा हो जाएगा। Is it correct? नहीं Yes sir. This slope is 0 ना, so T is inversely proportional to slope. 0 slope means large temperature. Any option is there like that? Option C. TB Yes sir, option C. greater than TC greater than TA, ठीक है, समझ आ गया? यस सर। तो थोड़ा केयरफुल रहना है, छोटी सी चीज है बट केयरफुल, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। ओके देन, बाकी क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करना। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन पोस्ट द क्वेश्चन ऑन द ग्रुप, वी कैन डिस्कस इमीडिएटली, बट नाउ द टाइम इज टू गो फॉर द क्वेश्चंस ओनली। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप देखोगे दैट विल, आपका एग्जाम उतना ही, योर प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जाम। जितना पढ़ते जाओगे थ्योरी थ्योरी थ्योरी, या अभी मेरा टॉपिक नहीं तैयार है तो वो कभी तैयार नहीं होता। ओके, नाउ एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट 3 पेपर्स आई विल रिकमेंड कि एटलीस्ट 3 पेपर्स ही देखो लास्ट के, बट ट्राई टू सी इट एज क्विकली एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू। सर थैंक यू सर। यस, सर 2022 में एक